गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आर्टिकल 371 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 371 ए की वजह से जो है नागालैंड गवर्नमेंट रैट होल माइनिंग या इलीगल कोल माइनिंग को नहीं रोक पा रही है। तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि इसकी वजह से क्या ऐसा रीज़न है कि जो है रैट होल माइनिंग को रोका नहीं जा सकता। तो उसके लिए पहले तो आपको आर्टिकल 371 ए समझना पड़ेगा कि नागालैंड जो है उसको स्टेटस दिया गया था स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करके 1962 में, और आर्टिकल 371 ए जो है वो इंसर्ट किया गया था इसके लिए। तो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो हैं उनमें से एक है आर्टिकल 371 ए, जिसमें कि कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट तब तक नागालैंड में नहीं लागू होगा जब तक स्टेट की जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक रेजोल्यूशन से उसके ऊपर डिसाइड ना करे। अब क्या सारे एक्ट्स नहीं लागू होते हैं? नो, ऑफ कोर्स कुछ ऐसे एक्ट्स हैं अगर वो रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागा से डील कर रहे हैं, नागा कस्टमरी लॉ या प्रोसीजर से डील कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल और क्रिमिनल जस्टिस से डील कर रहे हैं, ओनरशिप या ट्रांसफ़र ऑफ लैंड्स और रिसोर्सेज से डील कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट का एक्ट कोई भी जो है वो बिना नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली के परमिशन के बिना नहीं अप्लाई होगा। तो 371 ए की जो है सिग्निफिकेंस अगर हम समझें तो ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नहीं है बल्कि एक लीगल मैकेनिज़्म भी है, और पॉलिटिकल प्रोसेस भी को जो है ये रेजोनेट करता है, जिस पॉलिटिकल प्रोसेस की वजह से नागालैंड जो है इंडिया के साथ जुड़ा था। ठीक है, तो अब देखें तो रैट होल माइनिंग का क्या केस है इसमें, ये समझ लेते हैं। तो नागालैंड में टन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स हैं। नागालैंड की कोल माइनिंग पॉलिसी के हिसाब से रैट होल माइनिंग की जा सकती है क्योंकि कोल डिपॉजिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, लार्ज स्केल और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस नहीं किए जा सकते उसकी वजह से। तो रैट होल माइनिंग जो है वो कंसेंट ऑफ फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट्स के बाद ही जो है वो की जा सकती है। ठीक है, तो यूनिक लैंड राइट्स हैं नागालैंड में, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलीगल कोल माइनिंग जो है वो की जाती है और जो है स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि यूनिक जो है वो स्टेटस है नागालैंड का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लॉ पैनल रिपोर्ट ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ये टॉपिक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो 22nd लॉ कमीशन जो है वो रिकमेंड कर रहा है कि साइमल्टेनियस पोल्स किए जाने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो लॉ कमीशन क्या है? एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी जो कि यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, एक एड हॉक बॉडी होती है ये, और ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। इसको डिफाइन नहीं किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको आर्टिकल 39 ए के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का इशू क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन का बेसिकली ये मोटिव है, जिसमें कि सारी स्टेट्स और लोकसभा के इलेक्शंस साइमल्टेनियसली किए जाएँ। वोटर्स जो हैं वो लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज़ दोनों की ही जो है वो सीट्स के लिए वोट करें एक ही टाइम पर, एक ही समय पर। ठीक है, तो अगर हम देखें हिस्ट्री में तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो हुए इंडिया में, फ्री इंडिया में, वो साइमल्टेनियसली हुए लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के। लास्ट टाइम पर जब ये साइमल्टेनियसली ऑलमोस्ट इलेक्शन हुए तो वो 1967 का टाइम था। उसके बाद से अब जो है कम से कम हर साल 2 बार स्टेट असेंबली इलेक्शंस ज़रूर किए जाते हैं। ठीक है, तो इतने ज़्यादा जो है बीच में प्रेसिडेंट रूल लगे हैं, स्टेट असेंबलीज टूट गई हैं, दोबारा से इलेक्शन करने पड़े हैं, तो उसकी वजह से ये सिचुएशन बन गई है। तो अगर हम देखें, लॉ कमीशन कह रहा है कि पार्ट 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है इलेक्शंस में, उसमें चेंजेस करके पार्ट 15 ए ऐड किया जाए ताकि साइमल्टेनियस पोल्स को रियलिटी बनाया जा सके। अब 2024 के इलेक्शंस में तो नहीं हो सकता ये ऑफ कोर्स, इसलिए 2029 के इलेक्शंस के साथ ये करने की सजेशन दिया जा रहा है। तो लॉ कमीशन कह रहा है कि पहला अटैम्प्ट आप क्या करो, ऑल पार्टी यूनिटी बनाओ, यूनिटी गवर्नमेंट बनाओ, ताकि अगर गवर्नमेंट जो है 5 साल के टेन्योर में टूट जाती है तो एक जो है गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जाए ताकि इलेक्शन ना करवाने पड़े, और अगर ऑल्टरनेटिव पॉसिबल ना हो तब इलेक्शंस करवाओ, लेकिन सिर्फ उतने टर्म के लिए जितना कि जो है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का टर्म रह गया है। ठीक है, और कमीशन कह रहा है एक सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाए सस्टेनेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस पोल्स को जो है वो डील करने के लिए। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाए
ताकि एक कॉमन वोटर लिस्ट भी बनाई जाए, क्योंकि अभी क्या है कि पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए जो है वोटर लिस्ट वो डिफरेंट होती है, और जो पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शंस के लिए वोटर लिस्ट का इस्तेमाल होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, कई स्टेट्स में। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो बहुत जो है वो नज़र बना कर रखी है उसने कि लार्ज कैश डिपॉजिट्स या फिर विड्रॉल्स तो नहीं हो रहे कोऑपरेटिव बैंक से जब 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पर। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट 2004 में बनाई गई, रिसीव, प्रोसेस, एनालाइज, डिसैमिनेट करने के लिए इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को डायरेक्टली रिपोर्ट करती है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन के एनालाइज करना, शेयरिंग करना, सेंट्रल रिपोजिटरी की तरह एक्ट करना उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो ये सब काम जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जो है उन्होंने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी तरह के कोर्सेज जो है वो कोलैबोरेशन करके इंडस्ट्री के साथ जो है वो डेवलप किए जाएंगे। तो इस प्लेटफॉर्म में कॉलेज स्टूडेंट्स और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स दोनों को ही जो है वो केटर किया जाएगा। तो इसमें प्रोग्राम्स जो ऑफ़र किए जाएंगे वो होंगे मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट, ये सब से रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाएंगे। तो बेसिकली एक इकोसिस्टम बनाकर देगा ये, जिसमें कि प्रोफेशनल और करियर डेवलपमेंट हो सके, और फोकस रहेगा ताकि लर्नर्स को रीच किया जा सके टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में और रूरल एरियाज़ में। अपस्किलिंग और रीस्किलिंग हर लेवल पर किए जा सके, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री लेवल पर भी, ठीक है। मल्टीलिंगुअल कंटेंट होगा, एआई इनेबल्ड गाइडेंस होगी, क्रेडिट रिकॉग्निशन और एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है वो पाथवेज ऑफर किए जाएंगे। तो आईआईटी मद्रास जो है वो इसको ऑपरेट करने वाला है, इस प्लेटफॉर्म को, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम। ये टॉपिक आपके जो है इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस ट्वीक की हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम से रिलेटेड। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम जो है वो लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को रेफ़र करती है। तो बेसिकली एक सेफ स्पेस देती है बिजनेस या बिजनेसेस को कि वो अपनी इनोवेशन को टेस्ट कर सकें, ठीक है। तो लो कॉस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ला सकें। तो डायनामिक एविडेंस बेस्ड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स को साथ कैसे डील करना है, तो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम के अंदर टेस्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली एक इन्वायरमेंट दिया जा रहा है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने का। फॉर्मल रेगुलेटरी प्रोग्राम जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैसे फॉलो कर सकते हैं, न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कैसे वर्क करेंगी, ये सब जो है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर होगा। अब इसमें कहा गया है कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है उसके प्रोविजंस को भी अकोमोडेट किया जाएगा, ताकि इस सैंडबॉक्स में जब प्रोडक्ट की या किसी भी जो है सर्विस की टेस्टिंग हो रही है, तो उन रेगुलेशंस को भी जो है वो देखा जा सके, ठीक है, कि वो कैसे इस प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हीमोफीलिया ए। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि इंडिया जो है फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल कर चुका है जीन थेरेपी का हीमोफीलिया ए से डील करने के लिए। हीमोफीलिया ए एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बॉडी की एबिलिटी टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स को अफेक्ट करता है। एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें कि ब्लड जो है वो टिपिकली क्लॉट नहीं हो पाता। तो ये होता कैसे है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है हमारे जीन में, उसमें जब कुछ चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ये डिसीज़ आगे फैलती है, आगे जो है जो आपके जनरेशंस में जाती है। तो मेल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस डिसीज़ को एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है उसमें रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए होती है। तो जीन थेरेपी क्या होती है, वही रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसमें कि एक पर्सन के जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि इस डिसीज़ को ट्रीट या क्योर किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रिसेंटली कहा है कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को क्लोज़ कर दिया जाएगा, जो कि 1989 में बनाई गई थी। एक वॉलंटरी नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट मेकिंग सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इसको एस्टैब्लिश किया गया था ताकि एजुकेशन को एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ में और अदर वीकर सेक्शंस में जो है वो प्रमोट किया जा सके। फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट भी होते हैं, ठीक है। तो कई तरह की स्कॉलरशिप स्कीम्स भी इसमें चलाई जाती हैं, इसी फाउंडेशन के थ्रू चलाई जाती हैं।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केरला हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 जो है वो हमें टेम्पल में वर्शिप करने का तो राइट देता है, लेकिन किसी को प्रीस्ट बनने का वो फंडामेंटल राइट नहीं देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 क्या है, उसकी सभी पर्सन्स इक्वली एंटाइटल्ड है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और राइट टू वर्शिप को। ठीक है, टू या फिर प्रोपेगेट रिलीजन करने को। आर्टिकल 25 जो है वो सिर्फ रिलीजियस बिलीव्स ही नहीं बल्कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी जो है वो कवर करता है, और ये सभी पर्सन्स को, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, उन सबके लिए अवेलेबल है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ और अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें दो एक्सप्लेनेशंस भी हैं कि वेयरिंग और कैरिंग ऑफ कृपान्स जो है सिख रिलीजन के जो है मेंबर्स के लिए वो अलाउड है, और हिंदूज जब हम बोलते हैं तो उसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट ऑटोमेटिकली आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कुला सेक्कारापिट्टनम पट्टिनम स्पेस पोर्ट। ये टॉपिक आपके जो है साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है न्यू स्पेस पोर्ट का कुला सेक्कारापट्टिनम में, तमिलनाडु में। तो ये एक न्यू स्पेस पोर्ट है जो कि थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न तमिलनाडु में जो है वो आने वाला है। ये सेकंड होगा इसरो के लिए, एग्जिस्टिंग स्पेस सतीश धवन स्पेस सेंटर के बाद ये सेकंड होगा। और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए ये फोकस रहेगा इसमें कमर्शियल बेसिस पर। तो 24 सैटेलाइट्स पर ईयर जो है वो लॉन्च की जा सकेंगी मोबाइल लॉन्च सेंटर द्वारा, और इस पोर्ट में से रॉकेट्स डायरेक्टली लॉन्च किए जा सकेंगे विदाउट रिक्वायरिंग लैंड मास को क्रॉस करना। ठीक है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स तो आपको पता ही है, 3 स्टेज या 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस हैं जिसमें, और एक लिक्विड प्रोपल्शन स्टेज भी होती है। ठीक है, लो कॉस्ट बेसिकली ये व्हीकल्स हैं जिससे कि हम सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। ओके, 500 किलो तक की सैटेलाइट्स को 500 किलोमीटर ऑर्बिट पर लॉन्च किया जा सकता है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Article 371A of the Constitution. This topic is important for your polity section. So Article 371 of the Constitution has become a major hurdle in Nagaland government's efforts to regulate small-scale illegal coal mining activities in the state. The state government has been under pressure to regulate coal mining activities recently after 6 miners died in an explosion in the rat hole mine in Wokha district. So to understand this issue, we have to first understand what is Article 371A of the Constitution. So when Nagaland was being given the status of a state by the Constitution, 13th Amendment Act was passed and Article 371A was inserted into Part 21 of the Constitution. So Article 371A allows special constitutional provisions to the states, and it reads that notwithstanding anything in this Constitution, no act of parliament in respect of religious or social practices of the Naga customary law and procedure, administration of civil and criminal justice, ownership and transfer of land and its resources shall apply to the state of Nagaland unless the Legislative Assembly of Nagaland by a resolution so decides. So basically, until the Nagaland Assembly decides that this particular act of parliament which is dealing with these issues can be applied to the state of Nagaland, though that act would not be applicable in that state. Okay, so this is a special status. Okay, so this article is not a constitutional right only but a legal mechanism, and it also resonates with the political process, which is the barometer that represents the will of the people. So it safeguards the collective rights of the Nagas, and how this rat mining is dealing with this particular regulation. So state has almost 492.68 million tons of coal reserves, and Nagaland's coal mining policy which was notified in 2006, allows for rat hole mining as the coal deposits are too scattered for large scale and coordinated operations. And rat hole mining can be undertaken only with the consent of the departments concerned, including that of forest and environment. So officials claim that state government awarded several rat hole mining leases with proper forest and environmental clearances and defining mining plans. So this has not stopped people from operating such mines illegally, and because the state has unique land rights under the Article 371A, this has made regulating illegal coal mining activities more challenging. Okay. So the next topic is Law Panel Report on Simultaneous Elections. This topic is important for your polity section.
So, as per various media reports, 22nd Law Commission is set to recommend the addition of a new chapter on simultaneous polls in the Constitution. So, 22nd Law Commission is headed by the former Karnataka High Court Chief Justice Ritu Raj Avasthi. So, Law Commission is a non-statutory body constituted by the Union Government, and it can be referred to as an ad hoc body, and it works as an advisory body to the Ministry of Law and Justice. It is not defined under the Indian Constitution, but it is constituted as part of Article 39A. So, the concept of simultaneous elections include one nation, one election, which is a system in which all state and Lok Sabha elections must be held simultaneously. This implies that voters will vote for members of the Lok Sabha and state assemblies on the same day and at the same time. So, the first general elections of Free India were held simultaneously with the state assembly elections in 1951. This continued until 1967 when some sort of near simultaneous elections were held. But after that, several presidential rules, then premature closure or premature dissolving of state assemblies occurred. So this has led to a situation that now we have at least two round of state assembly elections each year. Okay, so what does this paper by Law Commission says? That under part 15 of the Constitution, which deals with elections, we should insert a new chapter, part 15A, which would make provisions for simultaneous polls. So, with 2024 elections around the corner, recommendations will now be for 2029, of course. And this commission says that synchronizing assembly elections in two stages in the next 5 years can be done. Okay, so Law Commission says that in case government falls midway, then or if there is any hung assembly, then first there should be an attempt to form an all-party unity government, and if not possible, then alternative should be to, of course, hold elections only for the term which is remaining before another cycle of simultaneous polls can be held. So, as per this commission, a second constitutional amendment would deal with sustainability of simultaneous polls, and the third constitutional amendment would specifically deal with the common voter list. Okay, currently in many states, the voter list for the panchayat and municipal elections is different from the one used for parliament and state assembly elections. So that needs to be worked out also. Okay. So the next topic is Financial Intelligence Unit. This topic is important for your governance section. So India's Financial Intelligence Unit is keeping a close eye on large cash deposits and withdrawals from cooperative banks ahead of the Lok Sabha elections. So Financial Intelligence Unit was set up by the Government of India in November 2004, and it is the central national agency which is responsible for receiving, processing, analyzing, and disseminating information related to suspected financial transactions. So it's an independent body which reports directly to the Economic Intelligence Council, headed by the Union Finance Minister. Okay. So the next topic is Swayam Plus platform. This topic is important for your governance section. So recently, Union Minister of Education and Skill Development has launched this Swayam Plus platform, which offers courses developed collaboratively with the industry. So this platform aims to enhance the employability of both college students and lifelong learners. It will offer programs in sectors like manufacturing, energy, computer science, healthcare, hospitality, management studies, etc. And this will focus on creating an ecosystem for all stakeholders in professional and career development, and it will focus on reaching learners from tier 2 and 3 towns and rural areas also. And it will also help in pursuing upskilling and reskilling at all levels, namely certificate, diploma, or degree. So it will feature innovative elements like multilingual content, AI enabled guidance, credit recognition, pathways to employment, etc. And IIT Madras will be operating this platform. So the next topic is Regulatory Sandbox Scheme. This topic is important for your economy section. So RBI has tweaked guidelines for Regulatory Sandbox Scheme, which refers to the live testing of new products or services in a controlled regulatory environment. So basically, it's a safe space for business as the regulators, and they may or may not permit certain relaxations for the limited purpose of testing. So it's an important tool which enables dynamic evidence-based regulatory environments and learn from that with respect to emerging technologies. So it provides an environment for innovative technology-led entities, and it's a formal regulatory program for market participants also. So it includes new or emerging technology who are
responsible for innovation in financial services. And the recently updated framework also requires them to comply with the provisions of Digital Personal Data Protection Act of 2023. And the timelines of various stages of regulatory sandbox process have been revised from 7 months to 9 months now. Okay. So the next topic is hemophilia A. This topic is important for your social issues. So recently, Union Minister of Science and Technology has told that India has conducted the first human clinical trial of gene therapy for hemophilia A, and it's a genetic disorder which affects the body's ability to form blood clots. It's a rare disorder, of course, in which the blood does not clot in the typical way, and the gene for hemophilia is carried on in the X chromosome. So males are more likely to have hemophilia than the females. So the treatment involves replacement therapy. So what is this gene therapy? So basically, it's a technique in which the person's genes are modified to treat or cure that disease. Okay. So the next topic is Maulana Azad Education Foundation. This topic is important for your governance section. Ministry of Minority Affairs has recently ordered the closure of Maulana Azad Education Foundation, which was established on the occasion of Maulana Abul Kalam Azad's birth centenary celebrations in 1989. So it's a voluntary, non-political, non-profit social service organization, which was established to promote education among the among the educationally backward minorities in particular and other weaker sections in general. So it is fully funded by Ministry of Minority Affairs, and Minister of Minority Affairs is the ex officio president of this foundation, and there are several scholarship schemes which are being run by this foundation. So the next topic is Article 25 of Indian Constitution. This topic is important for your polity section. So Kerala High Court has recently observed that fundamental right under Article 25 of the Constitution only permits or only gives fundamental right to enter a temple for worship, but it does not give right for the Hindu community to perform the role of priests. So what is Article 25? It basically says that all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate religion, which means the freedom of conscience, right to profess, right to practice and right to propagate. And Article 25 covers not only just religious beliefs but also religious practices, and these rights are available to all persons, even citizens and non citizens. And these rights are subject to public order, morality, health, and other provisions relating to fundamental rights. These rights also contain two explanations, which says that wearing and carrying of kripans is is to be included in the profession of Sikh religion, and Hindus in this context would include Sikhs, Jains, and Buddhists. So the next topic is Kula Sekarapettinam spaceport. This topic is important for your science and tech section. So PM Modi has recently laid down the foundation of a new spaceport at Kula Sekarapettinam in southern Tamil Nadu, in Thuthukudi district of southern Tamil Nadu basically. So this is the second spaceport after the Satish Dhawan Space Center of ISRO. So this will focus on the launch of small satellite launch vehicles on a commercial basis. It would have the capacity to launch 24 satellites per year using a mobile launch structure, and this port can launch rockets directly south over the Indian Ocean without requiring them to cross land masses. Okay, so that's why it would save fuel also. So what is the small satellite launch vehicles? So this is a three-stage launch vehicle which is configured with the three solid propulsion stages and a liquid propulsion based velocity trimming module at the terminal stage. So it is capable of launching 500 kilogram satellites in 500 kilometer planetary orbit, and the key features of SSLV are that it is low cost, it has low turnaround time, it has the flexibility in accommodating multiple satellites, launch on demand feasibility, minimal launch infrastructure requirements, etc. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.